देखो ABP Sanjha टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 ਤੇ। कोरोना के नवे रूप ओमिक्रॉन खिलाफ कैनेडा सरकार बूस्टर डोज की तैयारी कर रही है। 18 साल तो वध उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगवाउण की सलाह दी गई है। कौमांतरी यात्रा करने तो पहला अराइव कैन ऐप ते जानकारी साझी करनी लाजमी की गई है। कोरोना के नवे वेरीएंट ओमिक्रॉन कारण कैनेडा च बूस्टर डोज की तैयारी की जा रही है। पब्लिक हैल्थ एजेंसी ऑफ कैनेडा के वलों 18 साल तो वध उम्र के लोगों को बूस्टर डोज की सलाह दी गई है। इस तो पहला सरकार ने 65 साल तो वध उम्र के हाई रिस्क वाले लोगों को ही बूस्टर डोज देने का फैसला लिया सी, पर ओमिक्रॉन वेरीएंट के कारण कैनेडा के कई सूबिया ने इस दे लई उम्र हद नूं घटा दिता है। ब्रिटिश कोलंबिया 65 साल तो वध उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज शुरू हो चुकी है। अगले साल जनवरी की शुरुआत तो 65 साल तो घट उम्र के लोगों को यह डोज मिलेगी। इस तो इलावा अल्बर्टा, ओंटारियो समेत कई सूबिया ने बूस्टर डोज शुरू कर दी है। So the NACI recommendation is still to strongly recommend it for the groups, not only because they were at higher risk potentially for serious outcomes, but that they were immunized earlier. So the recommendation is that the booster dose should be offered 6 months or more after completion of a primary series. So both the duration of when someone has received that vaccine, as well as whether they are at higher risk of serious outcomes, are taken into account. So NACI also strengthens their recommendation over time as well as more data becomes available. As Dr. New has said in French, the data that we have at the moment shows that the vaccines are holding up pretty good against severe outcomes. कोरोना वायरस के मामले घट होने बाद पड़ाववार खोले जा रहे ओंटारियो के रीओपनिंग प्लान नूं फिलहाल के लिए रोक दिता गया है। कोरोना के नवे वेरीएंट ओमिक्रॉन कारण यह फैसला लिया गया है। Seeing an increase in some of its key indicators, including the effective reproductive number, the percent of tests that are positive, and our weekly case rates. And out of an abundance of caution, we are pausing the next step of the plan to reopen Ontario and manage COVID-19 for the long term. This means that the planned lifting of capacity limits in remaining settings where proof of vaccination is required will not be moving ahead on November 15th. कैनेडा सरकार के सेहत विभाग ने अपने नागरिकों या यात्रियों को बूस्टर डोज लगन तो बाद एक ऐप जारी की जिसनों हर हवाई अड्डे ते चैक किया जाएगा। जेकर फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो या बूस्टर डोज नहीं लगवाई गई तो कैनेडा च एंट्री नहीं मिलेगी। अराइव कैन ऐप ते जानकारी देना जरूरी किया गया। That this government will never hesitate to put in place the public health care measures which are required at the border to protect all Canadians, particularly now as we continue to learn more about the variant of concern, Omicron. It's absolutely necessary that we exercise an abundance of caution at the borders to protect everyone so that we can protect the progress that we've made thus far. And with regards to ArriveCan, I want to assure my colleague that I've spoken with the CBSA so that there's additional guidance to provide the opportunity for travelers to provide the information that is necessary on ArriveCan in person at the borders. बूस्टर डोज के लिए उम्र हद नूं घटाउण दे नाल-नाल लोकां नूं एहतियात वरतण दी अपील की जा रही है। Most effective tool against COVID in general. This is especially important as we head into cold and flu season and start to look towards the holidays. Nearly 89% of Albertans 12 and over have now had a first dose. That's 3.4 million Albertans. And more than 84%, or 3.2 million people, are fully vaccinated. If you are one of them, thank you. Thanks as well to more than 33,000 children aged 5 to 11 who've now had their first dose, and thanks as well to their parents and guardians. There are another 52,000 appointments booked, and that's more than 21% of all kids in this age range vaccinated or scheduled to be vaccinated. That's another success for Albertans and for the dedicated nurses and other healthcare professionals who are doing the vaccinations. It's also a step forward in reducing the risk for our kids, their families, and our communities as a whole. Now it's time to take the next step and expand access to third doses.
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਮੀਕਰੋਨ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। पंजाब और पंजाबियत की परछाई। अब देखें एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।